first unit upon is the plant tissue culture, complete only. In my previous lecture, we have discussed about the applications of plant tissue culture. This is the last chapter of plant tissue culture and virus-free plants. We have discussed in detail about the plant tissue culture. Now, we are going to start today the molecular biology. Before discussing in detail about the molecular biology, I would like to discuss about overall molecular biology, genetic engineering, and where the plant tissue culture stands in the biotechnology. So in biotechnology, we have discussed I am discussing about the different branches of biotechnology. First of all, we have discussed about plant tissue culture. Second, molecular biology. And third, genetic engineering. From its plant, all the aspects we have discussed in the plant tissue culture. But in molecular biology means we will discuss in detail about DNA, gene, that is genomics, RNA, that is transcriptomics, then protein, proteomics, and then metabolites, that is called metabolomics. Molecular biology means DNA, gene, its structure, its function, and modification in DNA and gene. Whatever the DNA we have modified, we have studied, we have sequenced, we have amplified. This is all in molecule. After identification of the DNA, after knowing the functions of the DNA or gene, after knowing isolation of DNA, after knowing cutting of DNA, after knowing sequence of DNA, after knowing amplification of DNA, multiplication of DNA, cloning of DNA and gene, then we have to insert the isolated, identified and amplified gene or DNA to a different organism or biological source using certain techniques, and this is called genetic engineering. So in molecular biology, how to isolate DNA or gene. This is in molecular. Then cutting of DNA or gene.
inserting or joining the desired gene or DNA from one biological source to another organism. DNA from one biological source, study, cut, amplify and join the DNA to the different DNA. And this is called recombinant. जब आप किसी भी बायोलॉजिकल सोर्स से एक डीएनए और एक जीन जो एक डिजायर्ड कैरेक्टर की होती है उसको यदि आप आइसोलेट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, सीक्वेंस करते हो और उसकी कॉपी बनाते हो, एम्प्लीफाई करते हो, क्लोन करते हो और जब आप वह स्टडीड डीएनए और जीन की कॉपी किसी दूसरे डीएनए पे इंसर्ट करते हो, then this is a new combination of DNA, a formation or a production of a unique type of DNA by joining one DNA to the other DNA, and this is called recombinations, means recombine करना. So today we will discuss about the recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology. This is nothing but when we join two different type of DNA together and form a unique DNA, and this technology is called recombinant DNA technology, and this phenomenon is called recombinant DNA. So production of, in one way, production और जब एक यूनिक डीएनए का प्रोडक्शन करते हैं ऑफ यूनिक डीएनए और जीन, बाय जॉइनिंग टुगेदर by joining together two or more DNA molecules. By joining together two or more DNA molecules fragment which are not associated normally, जो नॉर्मली नेचर में एसोसिएटेड नहीं होते हैं. The technique is called, this is called recombinant DNA technology. This is called recombinant DNA technology. There are so many so-called definitions of recombinant DNA technology. The recombinant DNA technology is one of the recent advances in biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है ये recombinant DNA technology. It is recombinant DNA technology. This technology is one of the recent technologies in one of the recent, this अभी ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है इन बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल which was developed by Boyer and Cohen in 1973. This technology in 1973 was developed by the Boyer and Cohen. Actually, recombinant DNA टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, यह एक सीरीज ऑफ प्रोसेसर्स। There are so many techniques involved in the recombinant DNA technology. ये बहुत इजी है कहना कि एक पार्ट से डीएनए आपने लिया, आइसोलेट किया और दूसरे कोई भी डीएनए के मॉलिक्यूल्स के साथ उसको ज्वाइन कर दिया और एक नया डीएनए का मॉलिक्यूल बना दिया। बट इन होल recombinant DNA technology, there is a series of technologies are involved. If you talk about the basic principle of DNA technology, means basic principle क्या है? Basic principle of recombinant DNA technology means DNA from one biological source inserted into, जब एक बायोलॉजिकल सोर्स को से डीएनए को लेके into new DNA molecules which may be called vector, which may be called एक जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, अगर उसमें आप कोई फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हो और वह जो कि लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। और इस वेक्टर को जब आप होस्ट सेल बनाते हो तो वेक्टर के साथ साथ डीएनए भी, आपका डिजायर्ड डीएनए भी इंसर्ट हो जाता है। नाउ बहुत पहले जब रिसर्चेस होती थी, जब प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक जेनेटिक्स आपने पढ़ी, तो प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक genetics earlier prokaryotic and eukaryotic genetics, जिसमें इसी जेनेटिक्स को बेस बनाकर the new technologies, new tools and technology were developed. And in new technologies, these technologies after earlier prokaryotic and eukaryotic genetics, new tools and technologies which were developed, and these are called molecular techniques. And इसके बाद molecular biology का विकास हुआ। Means when you study the DNA molecules, micro and macro molecules in plant cell, that is called molecular biology. कई सारे तकनीकी टेक्निक्स इसमें इन्वॉल्व है और अभी भी इसमें और नई नई टेक्निक्स ऐड होती जा रही
साइंटिस्ट अभी भी एग्जामाइन कर रहे हैं स्पेसिफिक रीजन ऑफ जीनोम। जीनोम क्या है, कितनी जीन्स है, तो डे बाय डे कई तरह की टेक्निक्स इसके अंदर इन्वॉल्व की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेसर्स। टेक्निक्स की एक श्रृंखला है। इट इज नॉट इजी कि आप एक टेक्निक को यूज में लेके डीएनए का रिकॉम्बिनेशन बना दो, आप नया डीएनए बना दो, या एक कंबाइंड डीएनए बना दो। दिस इज वेरी इजी टू से, लेकिन एक सीरीज ऑफ प्रोसेसर्स। वी विल टॉक अबाउट दी व्हाट आर द सीरीज ऑफ प्रोसेसर्स which are involved in the recombinant DNA technology. Series of protocols, series of methods, series of processes, the same thing. तो ये चीज़ें एक पूरा प्रोसेस है जिससे आप पूरी recombinant DNA टेक्नोलॉजी को आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले these series of processors of रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोमिक डीएनए मीन्स टोटल डीएनए प्रेजेंट इन cell of an organism। कितनी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक कोशिका में पड़ा हुआ टोटल जो डीएनए होता है विद देयर कैरेक्टर्स, विद देयर ट्रेट्स, दिस इज कॉल्ड जीनोम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, देन identification of DNA of desired character, isolation के बाद identification of the DNA। कौन सा DNA is genome, because genomic DNA is nothing but a complete DNA। All the genes are present. The genes of all the traits are present in genomic DNA, means total DNA of a cell. Here, first of all, you have to isolate the genomic DNA, from which you have to identify a particular gene which is to be transferred. So, identification of DNA और DNA of desired character को आपको आइडेंटिफाई, then amplification और cloning of DNA। desired DNA जो आपका है उसका आइसोलेट करो, आइडेंटिफाई करो, एम्प्लीफाई करो, देन सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए और मीन्स कितने बेस पेयर का न्यूक्लियोटाइड का डीएनए आपने एम्प्लीफाई किया, मान लो इट इज 500, 1000, 2000 न्यूक्लियोटाइड का डीएनए। यू हैव टू नो what is the sequence, adenine, thymine, cytosine, guanine, guanine. You have to sequence the DNA. You know what is the sequence of that particular DNA. When you know the character of DNA, when you isolate the DNA, when you amplify the DNA, then you have to know sequence. Then, analysis of DNA.
that is called bioinformatics. By bioinformatics tools, certain software you have to analyze. So there are a number of techniques involved in the recombinant DNA technology, and this is the main. These are not the techniques, but this is the process how to recombinant DNA recombinant technology, that isolation, identification, amplification, sequencing, and analysis of gene sequence by. There are some techniques. In next turn, we will discuss about some technique of recombinant DNA. Thank you.